the Pakistani media, the Pakistani academia, the Pakistani intelligentsia. Our media channels, our social media, our analysts, our anchor persons, our reporters made us look very good at the global stage, because at one hand you had the Indian media indulging in war hysteria, in war mongering, and we had this theater of sorts going on in which they had destroyed the port of Lahore, which is a landlocked city, the port of Multan, which is also a landlocked city. So we saw these absurd claims being made, and we saw that Pakistani media was giving out information which was 100% authentic, which was verified, and which could not be contradicted at any level. And what was the reason? Because there was complete unanimity. There was a smooth flow of information, uninterrupted flow of information between the state institutions and the private sector media. And I was thinking that we grew up with a certain sense of patriotism. What about the Gen Z? How would they respond in this situation? But I tell you that our younger generation has made us so proud that when during this heat of war, they started their own meme war. Now the whole world was wondering that you have missiles and bombs flying around, and you have the Pakistani youngsters sitting on their keyboards and their smartphones making these memes. And the enemy was wondering that war is a serious business. What is Pakistan doing to us? And Alhamdulillah, we were at the top of our game. So when it came down to the narrative game, when it came down to the actual war, the conventional war, when it came down to diplomatic efforts, our foreign office, our foreign ministry, all state institutions, because we had a lot of truth to tell to the world, and we told it the right way. So I think we were, alhamdulillah, at the top of our game. On the other hand, the enemy, they kept making mistake after mistake. And the whole world saw that how their nefarious designs were exposed. And as I said, the civil military leadership being on one page and being united, and that was true for every level. So that unity really helped us tell the world what we meant. And I must pay tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir and his bold and courageous leadership. And the way Pakistan responded, it lifted the spirit of the entire nation. And we, Pakistan as a responsible nation, responded with regard to military targets, with regard to military bases. As opposed to India, they had attacked our civilians. Our valiant Air Force, when those 8 planes went down, and a lot of them were Rafale planes, which are a source of pride for India, those planes brought down with them the Indian arrogance and proved to the world, once again, our dominance in aerial battle, and how Pakistan's indigenous technology helped Pakistan achieve victory. And our Navy was alert and ready to respond to any aggression. So this Marka-e-Haq belongs to the entire nation. We saw the entire nation stand tall, stand united. And we set aside our political differences. We set aside our difference of opinion. And the whole nation came together as a united force. So I think in my domain, the narrative domain, my work was very easy because we were telling hard facts and we were telling the truth to the world. I remember when the first missiles came in Bahawalpur and Muridke, we have a digital communication department, a state-of-the-art department which we've established. So it took me 20 minutes to get there and just man the seat and
address the international media and tell them what was going on. So Pakistan was not only well within its right, but I think we had a lot of support from the people of Pakistan, because the people of Pakistan were standing behind their armed forces, behind the government. And the whole world saw that starting from the false flag operation of Pahalgam and the baseless allegations made against Pakistan, Pakistan played all its cards right. And you've seen the aftermath of Marka-e-Haq. The nation till today stands united, and you've seen the kind of respect and dignity that Pakistan has earned in this 1 year after the success of Marka-e-Haq. Pakistan's relevance, significance at the international level. Pakistan's name is taken with a lot of respect. People see it as a serious country which is resolving international disputes. Our leadership is widely respected. The world realizes Pakistan's potential, Pakistan's talent. And on the other hand, you had your eastern neighbor, which spent hundreds of billions of dollars through lobbying firms, through PR firms, to come up with its shining slogan. But from shining to isolation, this is a 1 year journey. When you base your entire premise and narrative on false information and propaganda, and you externalize your internal issues and internalize your external issues, and you try to create hegemony within the region, and you assume the role of a bully of South Asia, that can never go well for you. And within this 1 year, as I said, from shining to complete isolation, we've all witnessed this great journey, how Pakistan has transformed after Marka-e-Haq. It's a moment to be proud, and it's a moment to bow our heads before Almighty in humility, with the hope that Pakistan continues to prosper and the people of Pakistan continue to feel proud in this great nation of ours. Thank you very much, Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir, for your remarks. मैं इसको ऐसे कह रही ना, तो मुझे पता था दोबारा वफाकी वज़ीर इत्तलात के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मार्का-ए-हक़ के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मार्का-ए-हक़ के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया का किरदार मज़ाक़ खेज़ था। मार्का-ए-हक़ के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कैसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो खुद कनाडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कत्ल में मुलव्विस पाया गया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां लाजवाल हैं। कौम आज भी पूरी मुकम्मल यकसुई के साथ अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। मार्का-ए-हक़ में पाकिस्तान की अवाम पूरे अज़्म के साथ अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी थी। मार्का-ए-हक़ में कामयाबी सबूत है कि पाकिस्तान के मुकामी तौर पर तैयार करदा आलात किसी से कम नहीं। चैलेंजेस से निपटने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबे भर के अजला को माली खुद मुख्तारी देने और मकामी रेवेन्यू से अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया, जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की पॉलिसी के तहत साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में सड़कों की ब्यूटिफिकेशन, स्ट्रीट लाइट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और दीगर अवामी मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सिर्फ आई वॉश नहीं बल्कि ग्राउंड पर अमली काम नजर आना चाहिए। कमिश्नर्स दफातर के बजाय फील्ड में मुतहरिक रहें। फैसलाबाद में खुले गड्ढे में बच्ची के जाँ भाग होने के वाक़े पर मरियम नवाज ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई और खुले मेन होल्स के खात्मे के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने तमाम तरक्याती मंसूबों में आला मयार, बरवक्त तकमील और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी की।
वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार ने हिजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में मार्का हक की कामयाबी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अली डार ने पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मार्का हक की कामयाबी पाकिस्तानी अफवाज की जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। अली डार ने कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, जबकि तलबा का जज्बा हुब्बुल वतनी और पाक फौज से मोहब्बत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आपके सामने जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो ऑलरेडी आजकल के रेटों के मुताबिक 1.25 साल में अपना पैसा पूरा कर चुका हुआ है और इसी हाई रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अगले 6 साल और कमाई करेगा। ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो मैं इनको पेश कर रहा हूं। हमारी वेबसाइट के ऊपर उसकी सारी IRR की और पेबैक पीरियड की जो वर्किंग है वो पेश की जा चुकी हुई है, नेपरा की हेयरिंग्स के अंदर पेश की जा चुकी हुई है। ताकि अगर ये फरमा रही हैं कि बिजली कहाँ है, तो बिजली इधर है ना, जाएं आप अगर 14 मैंने आपको अर्ज की बिजली मेरे हलके के अंदर भी 5 फीडर्स के ऊपर नहीं है, 18 घंटे नहीं है। मैं अपना वजारत का जोर लगा के उसके 18 घंटे लोड शेडिंग तब तक नहीं खत्म कर सकता जब तक वो खुद लाइन लॉसेस मेरा महकमा ज्यादा एफिशिएंट होके लोगों की कॉपरेशन के साथ नहीं खत्म करता। 14,000 फीडर्स में से 11,000 फीडर्स के ऊपर जीरो लोड शेडिंग है। आपके हैदराबाद के रीजन के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के प्रोविंस के अंदर, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सपोर्ट के साथ हैदराबाद में 68 फीडर्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर लोड शेडिंग पहले हो रही थी और पिछले 3 महीने के अंदर हम उसको जीरो लोड शेडिंग के ऊपर लेके आए हैं। ये इस किस्म के बयानात को मैं वो झूठ और सच मैं आपको जनाब स्पीकर आज आपको इसी वक्त इस सेशन के खत्म होने से पहले उन 68 फीडर्स के नाम आपको पेश कर सकता हूं और आपको करूंगा ताकि इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मेरा ये क्लेम रिकॉर्ड के ऊपर आ सके। तो हमारी बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज हैं और ये बात फरमा रहे हैं कि ये अपने नुकसान क्यों नहीं कम करते। पहला साल इस हुकूमत का पावर डिवीजन ने टैक्स पेयर का फाइनेंस मिनिस्ट्री से 1260 अरब रुपए का बोझ था टैक्स पेयर के ऊपर। इस साल 1260 के बजाय 890 अरब रुपए सिर्फ हम लोग जी ले रहे हैं। एक साल में पावर डिवीजन ने 400 अरब रुपए का बोझ टैक्स पेयर्स के ऊपर कम किया है। हमने अपने डिस्कोस के अंदर नुकसानात को कम किया है। 586 अरब के नुकसान को कम करके एक साल के अंदर 397 अरब पे पिछले साल लेके आए। इस साल 397 अरब से मजीद कमी लेके आ रहे हैं जो 30 जून के अंदर है। आपको मैं सिर्फ एक लेस्को की मिसाल देता हूं। लेस्को ने 86 अरब का नुकसान किया था हमारी हुकूमत शुरू होने से पहले साल वो 86 अरब से 40 अरब पे आए। इस साल 40 अरब से 18 अरब रुपए के ऊपर मुतवक्को है। मुल्तान की कंपनी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिफारिश वजीर लगा सकता है अपनी एरिया की कंपनी है, उसका नुकसान हमने 36 अरब पहले साल था उसको 20 अरब पे लेके आए। इस साल वो नुकसान 2 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ रह जाएगा। तो हम हर फ्रंट के ऊपर, लेकिन अगर आप ये कहें कि नुकसान कम क्यों नहीं हो रहा, तो नुकसान भी कम हो रहा है और जो और फजूल खर्चियां हैं कंज्यूमर रेगुलेशंस के अंदर उसको भी हमने रैशनलाइज करना जरूरी है, वरना ये नुकसानात मजीद बढ़ेंगे। शुक्रिया मिर्जा। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे।